Getting it? Yes, sir. ठीक है, we'll start then. तो आमे बर्तन पॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करछे. पॉल्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग रे डील करे, जेमति एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन रो फर्स्ट होची जेमति हम कहले नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया रो गोटे अछि. इंडिया रो माने यू कैन सी देयर आर 8 प्रोग्राम्स. ओके, क्लीन एयर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ योर हिमालयन इकोसिस्टम. हां, और क्या डाउट अछि? Okay, so there are mane 8 you can say national programs. Our pakhre 8 agenda we have taken. So out of 8 agenda, one agenda is national clean air program. So national clean air program kichi kichi target nije samne rakhe. So recent jo nua target rakhi that is called the 40% reduction in the particulate matter. So kebe sudha achieve kari by 2026. Initial goals amra 30%, 20 to 30% reduction thila. Now we have increased our target to 40% reduction. Okay, particulate matter kono যেতବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସେସ୍ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସେ PM 2.5 ଆଉ PM 10 ଦିଟା ପାର୍ଟ ଆମେ ତାକୁ मेजर करू. ओके, ऑलरेडी क्वेश्चंस आसी सारची ओपीएससी रु. तो एनसीएपी रो एबे पर्यंत अचीवमेंट्स कोन अछि आ फेलियर्स कोन अछि. अचीवमेंट्स हमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द PM10 को कंसेंट करिबारे ताको रिड्यूस करिबारे वी हैव अचीव्ड दैट. PM10 रो कंसंट्रेशंस को दिल्ली एरिया रे मध्ये वी हैव एबल टू अचीव द रिड्यूस करि पाथिले. दिल्ली रैंक करथला माने फेलियर कोन सी फोर्थ ईयर माने कॉन्जिक्यूटिवली दिल्ली होची द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी. नेक्स्ट 35 cities out of 50 cities out of top 50 polluted city of the world 35 टा इंडियन सिटीज ऑप्शन. तापरे जदि 2021 रो रिपोर्ट अनुसार नो सिटीज इन इंडिया that met with the WHO air quality guidelines जोटा कि PM 2.5 रो माने स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर 2.5 रो जो लेवल्स WHO प्रेस्क्राइब करिछि इंडिया रा कोनोसी सिटी नाहंती जाको माने सेही पर्टिकुलर लिमिट भितरे रहउछंती. ओके, एवरीवन इज हैविंग पॉल्यूशंस मोर देन दैट. So this is the failure and achievement. So based on this we have revised our you can say target for the 40% reduction in the particulate matter concentrations. Okay, that's all. तो एबे देखिबा एडो माने ताकर नुआ एजेंडा कोन, नुआ पॉलिसीज कोन नै केसले जेमति हमें करे सिटी स्पेसिफिक प्लान्स रखिबा. So whatever plans that is going to be implemented in Delhi may not be suitable for another city, maybe Bhubaneswar. So city specific planning तांको urban bodies रो मध्ये किछि से रहिबो सेठी. नेक्स्ट होचे केतरा सिटी रे इंप्लीमेंट हबो 132 भितरु 123 are going to be your non attainment cities, and again 8टा रहिबो आपनकर मिलियन प्लस सिटीज. ओके, तो ए हिसाब रे से मिलियन प्लस सिटीज रो आइडेंटिफिकेशन के देतला 15 फाइनेंस कमिशन रो और नॉन अटेनमेंट जो सिटी नॉन अटेनमेंट सिटीज माने जो माने एबे पर्यंत टारगेट को ठीक भाबे अचीव करि परना, दे आर कॉल्ड द नॉन अटेनमेंट सिटीज. ओके, आज तो गोटे अलाइड प्रोग्राम कोन प्राणो कहि कि गोटे कहूछु पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन द नॉन अटेनमेंट सिटीज. ताकि एटा गोटे पोर्टल हमें लॉन्च करछो इंप्लीमेंटेशंस को मॉनिटर करिया पे. के मॉनिटर करिवो? एनसीएपी मॉनिटर करिवो. दैट्स ऑल. ओके, तो सिंपल वे रे हमें ती मन रखिया कि नुआ टारगेट लॉन्च हेची पीएम पर्टिकुलर मैटर को रेगुलेट करिया पे केतरा सिटी रे 132 ता सेग्रीगेशंस हमें देखिले. एक्स्ट्रा पोर्टल गोटे रिलीज हेची दैट आल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड. Norms for the thermal power plants not important, you can keep this part. ए बितर केवल गोटे जिनिस टिके ध्यान रे देखि देबे जेतोले हमें कहूछु जनरली जेतोले थर्मल पावर प्लांट कथा कहूछु द मेन पॉल्यूटिंग गैस इट इज एमिटिंग इज द S2O बिकॉज़ हमें जानछु सल्फर इज ए मेजर कंटेंट ऑफ योर कोल बर्निंग. ओके, इंडियन कोल्स को हमें कहूछु हाई सल्फर कंटेंट. दैट्स व्हाई वी जनरली इंपोर्ट कोल फ्रॉम अदर कंट्रीज जेमते ऑस्ट्रेलिया वगैरह रो इंपोर्ट करछु बिकॉज़ जो आपन को जो आयरन स्टील प्लांट्स अच्छी तो सही ठीक है हायर ग्रेड ऑफ कोल रिक्वायर्ड व्हिच कंटेन्स लेस सल्फर. ओके, तो जो गाइडलाइंस इशू करा हिची से गाइडलाइंस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ थर्मल पावर प्लांट पे. ओके, कैटेगरी ए पई बाय 2024 ए क्राइटेरिया हैज टू बी मेट विथ, एंड बाय फॉर द कैटेगरी 2 कैटेगरी बी जो हमें कोच 2025 देन कैटेगरी सी पे 2026 एमती डिफरेंट टाइमलाइंस रे इंप्लीमेंट करिया पे रिलीज करा हिची. ओके, तो कैटेगरी ए कहा रहिबो जो गुडा को हाँ कहते सीधा क्या डाउट अच्छी. तो कैटेगरी ए कहूँ जो माने थर्मल पावर प्लांट्स गुडा को 10 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द नेशनल कैपिटल अच्छी. देन कैटेगरी बी होची विद इन द 10 किलोमीटर ऑफ द रेडियस
फ्रॉम ए पॉल्यूटेड एरिया ओके जरूरी नुह जे केवल एनसीआर रे रहिबो आ पॉल्यूटेड जो कैटेगरी सी रहिला दैट इज द रिमेनिंग प्लांट्स तो एई टाइप रो हमें डिफरेंट अचीवमेंट्स करिवा SO2 रो पॉल्यूशन को केमिति हमें माने विद इन कंट्रोल रखिया बेस्ड ऑन दैट सो दिस इज नॉट important if you want you can skip this part. Next is the commission for the air quality management. This is important. Okay, so CAQM, what is CAQM? प्रथम कथा बुझे CAQM आस्तिला केबे तो it was came into see you try to see this about CAQM. It's a statutory body माने statutory body रो अर्थ कोन पार्लियामेंट गोटे लॉ अनुसार ताको एस्टैब्लिश करैछि ये केबे आसिला इट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2021 ता पूर्वरु 2020 रे ऑर्डिनेंस रे आस जाइथिला किंतु स्टैट्यूट पास हेइ नथला तापे ताको हेड करिवे गोटे चेयरमैन तांकर क्राइटेरिया कोन कोछि ही शुड हैव ए 15 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट और एंड पॉल्यूशन और 25 years of the experience in the administrative service. Okay, administration से experience थी 25 years otherwise specially environment related कौन सी experience environment field experience थी 15 years. Then only he can be the head of the माने he can be the chairperson of this body. Okay, our jurisdictions कौन? Our jurisdictions होची because you see it is the commission of the air quality. Where is it? This is the commission of air quality management in the national capital region and the adjoining area. ता अर्थ कोन जनरली हमें देखु छु विंटर सीजन रे नेशनल कैपिटल बा नियर बाय जो एरियाज होइला इट इज गोइंग टू सफर मोस्ट विथ द एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग इन अदर रीजन्स तो ताकू कम्बाट करिया पे दिस बॉडी वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर अपन कहबे जे एनजीटी तो ऑलरेडी थिला काहे के जिंस को आनले बिकॉज एनजीटी इज ए ओवरऑल बॉडी ओके तार जो jurisdictions रहिला it is extends to the whole of our country. Okay, especially Delhi by adjoining area ro jo air pollution related specific concerns achi that needs to be tackled by a separate body. Government felt that necessity, that's why they brought this body जोटा हमें CAQM कहूछु 2020 रे फर्स्ट ऑर्डिनेंस आसला 2021 रे थ्रू ए स्टैट्यूट इट वाज एस्टैब्लिश्ड. ओके, CAQM जो भी ऑर्डर पास करिवो that can माने जदी सेही ऑर्डर रे कोनोसी भी पार्टी एग्रीव्ड होची दे कैन अप्रोच एपिलेट अथॉरिटी एंड दैट विल बी द एनजीटी. बुझी परछंती जेमति सपोज आपण कोनोसी कोर्ट रो ऑर्डर एग्रीव्ड होचंती तो कोर्ट जाउचंती हाई कोर्ट को जाउचंती देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जाउचंती तो एपिलेट अथॉरिटी ए बॉडी रो एपिलेट अथॉरिटी होची एनजीटी. ओके, दिस मच यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द CAQM. तो CAQM वर्तमान काहे की न्यूज रे अछि बिकॉज़ इ कोन करछि इट हैज बैंड द यूज ऑफ द कोल in the Delhi and nearby and Delhi और surrounding area जो jurisdiction होची सही area रे coal based कोनोसी प्रकार plants का you can say thermal power plants किछि चलिबो नाही. It was having a complete blanket ban you can see, but कोटे exception होची. This is exception. Use of the low sulfur coal in the thermal power plants has been exempted from this ban. तो दिल्ली पाखापाखी एरिया जदि आपण जानि थिबे तो कोटे नेशनल पावर दिल्ली कहि की कोटे अछि इट इज थर्मल पावर प्लांट. सो if that thermal power plant is using a low sulfur coal then it is not under the ban criteria. Okay, generally hame thermal power plant में low sulfur coal को use करू ना because Indian coal is a high sulfur content coal. Okay, तो जो इंडिया रे जो कोल बाहर ताको हम कोट ना कोट यूज करिया ताको हम थर्मल पावर प्लांट यूज करू. आ जो रहिला स्टील और आयरन प्लांट जो हाई ग्रेड कोल्स दरकार जोटा कि लो सल्फर कोल दरकार ताको हम इंपोर्ट करके यूज करू. यदि पावर प्लांट भी इंपोर्टेड कोल यूज करिबा आउ थर्मल सॉरी पावर प्लांट सॉरी आउ रहिला जो आयरन आउ स्टील इंडस्ट्री भी यदि इंपोर्टेड यूज करिया तो हम इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जिवो. इंडियन कोल रो यूज ही कोन हबो डिस्पाइट हैविंग द फिफ्थ लार्जेस्ट यू कैन से स्टोरेज ऑफ कोल. So you should understand this. Next, one more thing is the graded response action plan. So the see, सुनो अपन पचार फिर ना कि ये गुड़ा करो content केंती. These are the best content for your mains writing. Okay, I'll be telling you जेमते हमें ऊपर जो थिला जो हमें पढ़िले you can say 2.5 particulate matter कथा जोटा कि target वर्तन 40% कला. It was just a one liner news. You can add it somewhere. But this action plan एटा जोटा वर्तमान हम पढुचे this is more of applicable because आपण जति देखिबे लास्ट ईयर मध्ये गोटे क्वेश्चन थिला स्टबल बर्निंग ऊपर. तो स्टबल बर्निंग रे जतोळे आसुची तमे कॉज लिखुचे कॉन्सिक्वेंसेस लिखुचे से सब जिंस तमे लिखुचे किंतु जतोळे गवर्नमेंट रो प्लान को जाउचे तो हमें हम पाखे बहुत अधिक रिसोर्सेस कम थाउची. तो यू कैन कम अप विथ दिस टाइप आंसर्स हम ताको गवर्नमेंट सेंसिटाइज करी कि किछि बॉडी एस्टैब्लिश करिछि रिसेंटली से बॉडी कोन करिछि जेमति कि कोल माने कोल रो यूज को बैन कला. Okay, like that these are the best thing for your answer writing. Okay, coming to the graded response action plan, एई जिंसटा कोन कहूची
This is also applicable in the NCR region. Okay, so see, जदि आमे वन गोटे टाइप रो एक्शन प्लान नहीं आसीबा फॉर ऑल टाइप ऑफ एरिया इट इज मे नॉट बी सुइटेबल. ओके, आमे जदि एनसीआर कहूँ, एनसीआर इज ए बिगर एरिया, एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया जतो कहूँ इट्स ए बिग एरिया. तो व्हाट वी शुड कम अप विथ द ग्रेडेड एक्शन प्लान. आउ गोटे कथा जो विंटर सीजन कथा कहूँ, विंटर सीजन नॉर्दर्न स्टेट्स इट इज ए लार्ज ड्यूरेशन पर्यंत रुहे, ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स पर्यंत रुहे. तो इफ वी आर टेलिंग वी हैव टू अडॉप्ट द मोस्ट स्ट्रिंजेंट सबुटु स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल आमे जदि यूज करिबा थ्रू आउट द 4.5 मंथ्स फॉर द एंटायर एरिया, इट मे बी बिग डिफिकल्ट फॉर द सर्वाइवल. So we have to come up with a graded action plan depending upon the air quality, which type of measure shall be taken so as the air pollution can be brought under control. Like that we have to come up with the approach. So it is called graded action plan. समस्त बुझी पड़छन graded action plan रो कोन. अब ये जो graded action plan कथा जो रहिला एटा तो गोटे एक्शन प्लान ना, जेमते हम 5 ईयर प्लान कहूँ. ओके, तो 5 ईयर प्लान जो कथा कहूँ ताको इंप्लीमेंट करिया पे गोटे बॉडी दरकार थिला, सेटा के थिला प्लानिंग कमिशन. तो लाइकवाइज ग्रेडेड एक्शन प्लान जो रहिला ताको इंप्लीमेंट किए करिवो, ताको इंप्लीमेंट करिवो एही सीएक्यूएम जो वर्तमान पढिले सीएक्यूएम कथा. तो आई हैव रिटन ओवर हियर it is the implementation is by the CAQM. So the graded action plan is implemented by the CAQM. Graded action plan ऊपर भी देखि दियंतु जदि स्टेज 1 को होजो जते बडे पुअर एयर क्वालिटी केते एयर क्वालिटी इंडेक्स जदि 200 to 300 भितरे अछि, माने 201 to 300. स्टेज 2 वेरी पुअर जते बडे 301 रो 400 भितरे अछि. सीवियर जते बडे 401 रो 450 भितरे अछि. जते बडे सीवियर प्लस केते बडे कहूछु जते बडे 400 यू कैन से प्लस 450 प्लस हो जाउची सेते बडे. तो लाइकवाइज तांकर मेजर्स कोन अछि, कोठी हमें पब्लिक अवेयरनेस करूछु तो कोठी डीजल इंजन को कंप्लीटली बैन करूछु, कोठी ब्रिक क्लीन्स गुडा को रहिला ताको कंप्लीटली बैन करूछु. तो लाइक दैट. ओके, as the air quality is degrading, the you can say the nature of the strictness of the action it is increasing. Okay, that you should remember. Clear about this? तो जो स्टबल बर्निंग कथा कहूँ, तो स्टबल बर्निंग आउ गोटे भी देयर इज वन मोर फैक्ट इज दैट इज कॉल्ड द बायोडिकम्पोजर कैप्सूल. सो दिस बायोडिकम्पोजर कैप्सूल इज डिजाइन्ड बाय ICAR, Indian Agriculture Research Institute. It is one of the possible solution for the stubble burning. Okay, so if the question being asked, these are the facts, you can use it and get good amount of marks. Okay, this is done. Next is the WHO air quality database. So WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस रिलीज हुए 2022 रे तार अपडेटेड डेटाबेस आसीची. तार 2022 रो रिपोर्ट अनुसार एंटायर ग्लोबल पोल्यूशन 99% ओके दे ब्रेथ द एयर दैट एक्सीड्स द WHO एयर क्वालिटी. जेमते हमें गोटे जिंस देखिथिले एई जगह रे व्हाट वाज दैट हियर वन पॉइंट in 2021 no cities in India met with the WHO air quality guideline of 5 microgram per meter cube 2.5. तो 2.5 रो जो PM 2.5 रो जो क्राइटेरिया WHO रखिथिला कोनोस भी सिटी इंडियन सिटीज मीट करनथि. तो लाइकवाइज जो बर्तन WHO रो रिपोर्ट आसी से कहूची 95% ग्लोबल सिटीज अछंती, ग्लोबल पॉपुलेशंस अछंती, दे आर not adhering to the WHO air quality limits. So what they are doing, they are inhaling or they are living in a air conditions which is it's harmful for the health condition. Okay, so किछि नुआ हैपनिंग हे छि कि WHO रो जदि एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिबे लाइक दिस, it was the air quality index, air quality guidelines, not index. Report to 2022 रो, you should not be confused, it is a report of 2022. बट ए 22 रो रिपोर्ट जोटा अछि ता गाइडलाइंस तो प्रति वर्ष नुआ नुआ दबनी. तो गाइडलाइन होची 2021 रो. तो गाइडलाइन कोन कहूची इज यू कैन सी देयर आर 6 मेजरमेंट. गोटे होची PM 2.5, PM 10, देन ओजोन, NO2, SO2, देन यू कैन सी CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 जो रहिला एरिया केवल 24 आवर हिसाब रे मेजर करा हुए. ओके, that's the average measuring time. Average measuring time is also important. It has already been asked. A line the questions already asithila. So SO2 और CO ए दिटा 24 आवर हिसाब रे मेजर करा होची. किंतु बाकी जिंस देखिबे जदी PM 2.5, PM 10 and again your NO2 ए गुडा को हमें एनुअल आउ 2. माने 24 आवर्स दीटा बेसिस रे मेजर करूछु. एनुअल गोटे डेटा बाहरची पर 24 आवर के कोन रहिला डेटा दैट आल्सो वी आर मेजरिंग. ओके, आउ जो रहिला ओजोन को हमें 8 आवर
आउ पीक सीजन रे मेजर करूछु दैट इज द ओनली एक्सेप्शन गेटिंग माय पॉइंट तो वर्तमान कौन चेंज है द फर्स्ट टाइम वर्तमान जो डब्ल्यूएचओ डेटाबेस रिलीज करछि ए जो N2O को हमें देखले एनुअल तो फर्स्ट टाइम पे एनुअल डेटा माने यू कैन दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अदरवाइज N2O को मध्य S2O भला केवल 24 आवर मेजर करथिले देयर इज नो एनुअल डेटा ओके दिस इज द चेंज यू शुड कीप इन योर माइंड तो अगेन वर्तमान देखिबा आ गोटे छोटो अलाइड न्यूज ताकू नै कि जस्ट वन सेकंड it is called national air quality resource framework for india ताको NARFI कहूछु तो एटा कोन see this is developed by national institute of advanced studies bangalore एटा ही डेवलप करछि it is not a government of माने कोनोसी गवर्नमेंट बॉडी रो डेटा नुह it is by a national institute of advanced studies जदि क्वेश्चन रे कंफ्यूज करेबो नीति आयोग करूछि बा suppose ministry of environment करूछि you should be able to answer this okay that's why I have given this information okay एटा prelim specific information not for your means आउ किछि इनिशिएटिव्स देखिबा BS6 दिसरा में जानि छु व्हाट इज BS6 बिकॉज़ इज द न्यू यू कैन से जो ऑटोमोबाइल रो हमें इंजन कहू छु आईसी इंजन तो कोन पैडा कोन आइतला बिकॉज़ पॉल्यूशन लेवल को कम करिया पे डीजल लेवल माने डीजल इंजन कोडा को टिके लेस पॉल्यूट करिया माने लेस पॉल्यूशन रिलीजिंग करिया पे अदरवाइज पेट्रोल इंजन तो भी सेम जिंसो थिला से भीतर गोटे स्पेशल इक्विपमेंट लाउतला जो कैटालिस्ट कन्वर्टर कहउथलो सेठी माने रेयर अर्थ मेटल्स थाए ताकि जो कार्बन मोनोक्साइड जोटा रहला दैट इज मोर हार्मफुल गैस जोटा रिलीज होतला ताको हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हिसाब रे रिलीज करछु बाय माने बाय पुशिंग देम इनटू द कैटालिस्ट कन्वर्टर जे की कैटालिस्ट कन्वर्टर रेयर अर्थ मेटल्स सहित से रिएक्ट करे और फाइनली दोस गैस एंड वाटर विल बी रिलीज्ड से विषय अपन जानिथिबे एंड इट इज अ ओल्ड न्यूज आई डोंट एक्सपेक्ट द क्वेश्चन शुड बी कमिंग ऑन दैट लाइन देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड द टर्म स्टेज व्हाट इज द टर्म स्टेज 4 टर्म स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स इज एप्लीकेबल फॉर द फार्म इक्विपमेंट जेमते हम BS6 कथा कहले एटा हमर माने ऑटोमोबाइल्स ऊपर लागू होची बट फार्म इक्विपमेंट से रहला से ट्रैक्टर हो पावर टिलर हो बा अदर फार्म इक्विपमेंट्स जोटी मोटर वगैरह यूज होची फॉर दैट दिस टर्म इज बीइंग यूज्ड ओके तो कहा पे लागू हो जनरली जार इंजन साइज इज मोर देन 50 हॉर्स पावर एटा नेक्स्ट गोटे माने भारत स्टेज 6 आसीबो for this farm equipments but this has not yet rolled out it will be rolling out from the 1st of April तो कहा पे लागू होगा जो मानकर इंजन साइज इज ग्रेटर देन 560 you can say kilowatt okay ए ग्रीन क्रैकर्स वगैरह एटा ओल्ड न्यूज़ तीन प्रकार ग्रीन क्रैकर्स अछि स्वास स्टार एंड सफल I think you at least this much awareness you have detail no भी जान ले नेक्स्ट इज ब्रेथ लाइफ कैंपेन कोन एटा गोटे वर्ल्ड वाइड कैंपेन गोटे हुए इट वाज बीन लेड बाय WHO UNEP आउ क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition तो ए तीनटा बॉडी रो गोटे जॉइंट इनिशिएटिव डिफरेंट सिटीज से माने भाग नियंते आउ दे लाइक ताको जो भी बेस्ट प्रैक्टिस अछि ताको शोकेस करंते ताकि अदर सिटीज ताको रिप्लिकेट करि परिबो तो इंडिया रो को सिटीज बर्तमान पार्टिसिपेट करथले जेमति कि बैंगलोर भुवनेश्वर देहरादून ये सब सिटीज पार्टिसिपेट करथले ओके आज भुवनेश्वर ऑल हैज पार्टिसिपेटेड यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ब्रेथ लाइफ कैंपेन कोन coming to water pollution this is all about your air pollution coming to water pollution give me 1 minute anyone having doubt till this otherwise we'll be moving to the water pollution see recently united nations ro water summit हेतिला water summit on the ground water कोट हेतिला पेरिस रे हेतिला 2022 रे ओके तो ये समिट को ऑर्गेनाइज के करथला फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएन वाटर गोटे ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट इज योर यूनेस्को ओके आ गोटे होची आईजी रैक तीनटा बॉडी यूएन वाटर यूनेस्को एंड आईजी रैक ओके तो आमे देखिया बर्तमान
सॉरी जेतोले हम देखिले एटा कोन अरेंज करथिला इट इज द वाटर समिट ऑन द ओनली ग्राउंड वाटर कंसेंट रे ओके तो तारो थीम बा टैगलाइन कोन थिला इट वाज द ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल ओके तो एबे देखियो जेतु तीनटा बॉडी को हमें देखले यूएन वाटर आईजी रैक आउ यूनेस्को विषय तो हमें जानिचे आप प्रथमे देखिया यूएन वाटर कोन यूएन वाटर होची गोटे इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर ऑल फ्रेश वाटर एंड सैनिटरी रिलेटेड मैटर तो यूएन वाटर इज रिलेटेड विद द फ्रेश वाटर यदि खाली आसीबो कि इट इज रिलेटेड टू द मराइन वाटर और यू कैन सी वाटर इट इज नॉट ओके दैट यू शुड कीप इन योर माइंड नेक्स्ट आईजी रैक कौन करुची ये गोटे यूनेस्को रो बॉडी बट ये कहा अंडर रे काम करुची डब्ल्यूएमओ जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ता अंडर रे काम करुची ओके तो आ काम कोन इट्स अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट माने आरो गोटे फ्लैगशिप प्रोडक्ट कोन ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम करुची इफ इट इज आस्क्ड who is publishing or producing this flagship product global groundwater information system it is by the IG rack kon UNESCO रो गोटे body that function under the WMO that's all और UN water kon गोटे UN रो organization বা UN रो गोटे agency जे कि fresh water और sanitation conditions में काम करूची ओके क्लियर बुझी पारले समझते ये जिनसे हमें जानी छु हां आ गोटे छोटो पॉइंट ग्राउंड वाटर विषय तो हमें देखले 2022 रे बर्तन हेतला पेरिस रे डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 ए डायनामिक वर्ड जे लागि जाय जस्ट गोटे इनसो देखिबे डायनामिक लागि छ माने एटा होची इंडिया रो ओके जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस आई एम टेलिंग दिस एटा इंडिया रो के करछि इंडिया रो फ्लैगशिप मिनिस्टर जे कि वाटर से रिलेटेड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंडिया रो a report of finding is very important even the question has already asked recent jo UPSC examination hela seiti pachar thai bisare India is the largest user of the groundwater with the 1/4 of the global withdrawal questions asla ei line re what a statement thila se bitre India is the largest consumer of the groundwater worldwide okay ଆଉ globally jete mane extractions hochi groundwater kebol 25% even more than 25% is India alone is doing that okay total annual groundwater recharge बर्तन बढ़ी ची compared to जो मैंने past event में जो देखिए it is 61% in India 61% एक मैंने जितनी कि हमें groundwater को use करूँ जो और 61% recharge जाऊँ but still we are having 40% हमें बर्तन कोटे अच्छो lag करूँ जो same nature जैसे हमें exploit करिया तो गोटे point ऐसे जो groundwater पूरा मैंने पूरा खत्म हो जीवो okay तो there are 3 terms you should remember ओभर एक्सप्लॉयटेशंस केतेबेले कहिबा क्रिटिकल एक्सप्लॉयटेशंस केतेबेले कहिबा सेफ केतेबेले कहिबा इफ यू आर हैविंग माने ऑप्शनल सब्जेक्ट और समथिंग दैट इज रिलेटेड जोडी ए पॉल्यूशन रिलेटेड किछि इनसो अछि दैट आल्सो यू कैन कोट देयर किबा एसे राइटिंग रे भी अपन कोट करि परिबे ओभर एक्सप्लॉयटेशंस केतेबेले कहिबा जदी आमे सेतिकी अमाउंट रो एक्सप्लॉयट करले जोटा कि रिप्लेनिश करि परिबो माने आउथरे नेचर ताकू रिफिल करि परिबो नाही इट इज कॉल्ड द ओभर एक्सप्लॉयटेड सिंपल वी कैन अज्यूम द डेफिनेशन आल्सो क्रिटिकल केतेबेले कहला इट इज ऑलमोस्ट 90 to 100% ऑलमोस्ट जते माने रिफिल होची सेते हमें एक्सट्रैक्ट कर दोच ऑलमोस्ट सेफ केतेबेले कहला इफ टोटल वाटर रो केवल 70% की हमें एक्सप्लॉइट करूचो और 30% हमें छाडुचो प्रति वर्ष ओके इन दैट केस इट इज सेफ सो देयर आर 3 टाइप ऑफ exploitated then critical then safe okay ଆଉ इंडिया रो कोन स्टेटस होची 1/4 ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होची 61% माने we are able to recharge it ए रिपोर्ट कहार मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द माने टैगलाइन बा रिपोर्ट और ना कोन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ठीक अछि को स्टेट रे सबट मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होची सिंपल आमे तो एदिटा जानि ही परिया सेमती हरियाणा और पंजाब अदर देन राजस्थान दादरा नगर हवेली दमन दीव ए सब मध्ये आसुची आउ अधिक डिटेल्स मन रखिया दरकार नै एग्जैक्ट कोटा केते परसेंट रे फॉल करची दैट इज इफ यू डोंट रिमेंबर नो इश्यूज नेक्स्ट इज वाटर कन्वेंशन बर्तन आमे जोटा पढिले दैट वाज द one we can say it was the summit for the groundwater that is done बर्तन आसला वाटर कन्वेंशन ए वाटर कन्वेंशंस कोन 2022 रो वाटर कन्वेंशंस हेतला इट इज मार्क केते 30 इयर्स एनिवर्सरी वाटर कन्वेंशन ए वाटर कन्वेंशंस किए करूची इट वाज डन बाय UNECE कोन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ओके ये करूची वाटर कन्वेंशन ए इकोनॉमिक
कमिशन फॉर द यूरोप ता विषय देखिए इट इज द इकोनॉमिक कमिशन फॉर यूरोप 1947 रे एस्टाब्लिश हेतला यूनाइटेड नेशन रो गोटे पार्ट यू कैन से बॉडी अंडर द इकोसो जो अछि तार प्रिंसिपल ऑर्गन अंडर इकोसो इट इज फंक्शनिंग जते भी डेवलपमेंटल बॉडीज अछि से इकोसो अंडर ही फॉर्मेशन माने फॉर्म करूछि माने वर्क करूछि obviously India is not a member to this because এটা यूरोपियन कंट्रीज मानकर ओके 56 यूरोपियन कंट्रीज अछनी ताकू छाडी कि हां वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर नॉट ओनली यूरोप नॉर्थ अमेरिका एशिया रो किछि कंट्रीज अछनी बट इंडिया इज नॉट ए मेंबर टू दिस दैट्स ऑल यू शुड रिमेंबर क्वेश्चन जदी माने आई लेस एक्सपेक्टेशन अछि बट स्टिल बहुत डिफिकल्ट पचे एमती पचार दबो जे ए जो यूएनईसी रहिला ता मेंबर्स केवल यूरोप टू ही थांती नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज़ नॉर्थ अमेरिका और एशिया रे भी कंट्रीज अछंती सेठी मेंबर्स हिसाब रे दैट्स ऑल ओके तो ए जो इनिशियली ए जो माने वाटर कन्वेंशंस ता हेथिला इट वाज एडॉप्टेड इन 1992 रे फर्स्ट से माने गोटे एडॉप्ट करतले हेल्सिंकी एक कौन प्रोनाउंस करते हैं हेल्सिंकी ओके तो एडा होची आपण फिनलैंड रो कैपिटल ओके सो देयर दे हैव अडॉप्टेड दिस फ्रेमवर्क और 1996 रे एक फोर्स को आसिला देन आर मेंबरशिप जो कन्फाइंड है कितला यूरोपियन मेंबर्स को पई इट वाज एनलार्ज्ड इन द ईयर 2016 2016 रे ताको एनलार्ज करा गला इतने माइन्यूट डिटेल अदरवाइज यू कैन स्किप इट नो इश्यूज दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर कन्वेंशन छाडला पर आउ गोटे अछि दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड वाटर फोरम इट इज समथिंग डिफरेंट व्हाट इज इट वर्ल्ड माने जो वाटर फोरम रहिला एटा रिसेंटली कोठी हेतला तार 9th एडिशन हेतला 9th वाटर फोरम हेतला this was held at the Senegal हुचे कोठी अछि it is a country of your Africa okay डाकर रे हेतला सेनेगल रे okay next तार एडिशन कोठी हो इंडोनेशिया बाली रे होबो okay every 3 year it is the world largest event on the water okay that is organized in every 3 year की ऑर्गेनाइज करूची आपको ये ऑर्गेनाइज करूची वर्ल्ड वाटर काउंसिल आउ एडी कंफ्यूज हेबेनी वन वाटर काउंसिल कोन इट इज ए थिंक टैंक इट इज नॉट ए बॉडी ऑफ यूएन तो एबे बहुत गुटे जिंस होय गला कंफ्यूजन होवार चांस अछि तो फर्स्ट रिवाइज दिस गोटे और थोड़ा ताको रिकॉल कर दवा देयर आर 3 थिंग्स हां मनीष कोन ना मनीष सर हां क्या डाउट अछि कोन हाउ प्रोटोकॉल भितर डिफरेंस कोन कहार कन्वेंशन और प्रोटोकॉल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल देखो सुन कन्वेंशन ता हमें केते बळे कहूछु जेते बळे हमें कहूछु इट वाज यूएनसीसी रो कन्वेंशन कन्वेंशन जनरली हमें कोन करू कि ब्रॉडर गाइड माने डिस्कशन हे जाय माने जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो माने मेंबर कंट्री अछंती हां से माने एक्सेप्ट करिवे कोटे पट्टी में एनएफसीसीसी कहूछु तो इट वाज रिलेटेड विथ द ग्लोबल वार्मिंग तो प्रथमे समस्त एक्सेप्ट कले जे हां ग्लोबल वार्मिंग इज ए कंसर्न और ए थ्रेट फर्स्ट से माने समस्त एक्सेप्ट जिंसो जे हां आपको टैकल करी कंबाइन स्टेप्स नबा दरकार ओके तापे फंडिंग वगैरह हबा दरकार एक्सवाइजेड जिंसो एगोटा ब्रॉड कैन से डिस्कशन वाज ऑलरेडी डन बट जेते प्रोटोकॉल आसीबो सेते बळे तार इंप्लीमेंटेशन सुपर कि सपोज ग्रीन हाउस गैस इज रेस्पॉन्सिबल तो ग्रीन हाउस गैस रेस्ट्रिक्शंस को ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल से पर्टिकुलर सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स कोन अछि से सोर्स केमिति तक हमें कम करिया व्हाट शुड द अप्रोच तारो से अप्रोच को एडॉप्ट करे फंडिंग दरकार बट से फंडिंग को केमिति हमें अरेंज करिबा ठीक अछि जेमते हमें कहूछु कार्बन ट्रेडिंग बा अदर थिंग्स so every minute detail for the implementation of the convention it is discussed under the protocol got it sir thank you okay ठीक अछि कोन ला तो हमें तीनटा जिंस पढ़ले लेट्स वंस डिस्कस दिस कोन ला इरेज होने बस 1 सेकंड ओके तो आमे तीनटा जिंस पढ़ले गोटे होची ग्राउंड वाटर कथा तो ग्राउंड वाटर रिलेटेड समिट कोठ हितला इट वाज एट द पेरिस किए करथिला तीनटा ऑर्गेनाइजेशन करथिले यूएन वाटर यूनेस्को एंड आईजी रैक ओके आईजी रैक विषय हमें देखिले और यूएन वाटर विषय हमें देखिले दिस इज डन यू शुड नॉट बी कंफ्यूज अबाउट दिस तापरे गोटे डायनामिक ग्राउंड वाटर रिपोर्ट कथा देखिले किए पब्लिश करथिला
इंडियन गवर्नमेंट रो हम इंडियन मिनिस्ट्री करथिला जल शक्ति तार फाइंडिंग्स गुडा हम देखिले इट वाज डन नेक्स्ट वाटर कन्वेंशंस कथा देखिले वाटर कन्वेंशंस के करथिला एटा गोटे यूएन रो जो यूरोपियन कमिशन फॉर सॉरी इकोनॉमिक कमिशन फॉर यूरोप अछि से ऑर्गेनाइज करथिला दैट इज द वाटर कन्वेंशन गुड इवनिंग नेक्स्ट आई मीन नेक्स्ट आउ गोटे जिंस कोन देखिले दैट इज द वर्ल्ड वाटर फोरम तो फोरम कन्वेंशन ग्राउंड वाटर तीनटा जिंस हम देखिले कंफ्यूज हेबे नाही ओके वर्ल्ड वाटर फोरम पड़िछि तो इट वाज हेल्ड एट द सेनेगल ओके नेक्स्ट कोन हो बाली रे होबो एटा कोन वर्ल्ड रो it is the you can say it is the largest water event on the water that is organized in every 3 years since 1997 किए organize करछि world water council करछि world water council गोटे UN रो body की no it is not a UN body clear कोनोसी doubt I don't think there will be any doubt Yes, sir. okay next gray water what is a gray water यदि काली आपण वीडियो हेबे फर्स्ट इनसे डील करिए ग्रे वाटर सहित बिकॉज़ ए जो कोन सेटा अछि हमरो एसबीएम जो मिशन अछि स्वच्छ भारत मिशन सेठी ग्रे वाटर विषय बहुत डील करे पड़े so gray water is some water that is released from the जेमते हमें बाथरूम रो किछि यूज होची शावर रो रिलीज होची हैंड वॉशिंग रो रिलीज होची वॉशिंग मशीन रो रिलीज होची so the why it is a gray water because see it is not a you can say you can't drink it right away okay it's already it is a you can say dirty water but it is not highly polluted water okay this gray water can simply be treated बहुत easily आपको treat करी हबो and it can be used again reused बुझी पड़छन्ते so these categorized under the gray water एटा न्यूज रे एथि पे अछि because 100% saturation of the gray water management के अचीव करछि गोटे तमिलनाडु गोटे विलेज अछि it is pronounced on करिवे Papankunji okay so Papankunji is a village in Tamil Nadu that was achieved 100% grey water management that's why it was on a news okay you should be able to know कि grey water कौन that's all heavy metal contamination सुपरे विशेष आवश्यक नहीं ए न्यूज पढ़िबा जस्ट यू शुड हैव द आइडिया कि डिफरेंट हेवी मेटल्स तार हेल्थ इंपैक्ट्स कोन अछि जंते कि हम आर्सेनिक इट इज वेरी बेसिक मु एक्सपेक्ट करू जे सब आसु छु आपन को आर्सेनिक इज you can say this is the cause for your blackfoot disease fluoride रो you can say जो dental problems बा skeletal बा हाड़ वगैरह जो जिंस अछि सेठी प्रॉब्लम है manganese फलरे हमरो brain development hamper हुए then uranium रो kidney related माने renal issues আছে then nitrate to blue baby syndrome जो कहू ओके एगुडा को सब माने मर्क्यूरी रो कोइ पिरे कोन अछि जोटा मिनामाटा कन्वेंशंस प्रोटेक्ट करूची ताको again coming to the health impact जदि आसुनी गोटे थोर देखिबे because heavy metals रो गोटे पूरा स्टैंडर्ड चार्ट आपन को मिल जिवो हां मिनामाटा कन्वेंशंस अछि तो heavy metals तो गोटे 7-8 टा अछि हां तो गोटे देखि देबे गोटे थोर ठीक अछि इज आर द स्टैटिक यू कैन से न्यू एनीहाउ जदि हमें साइंस एंड टेक ताको डील करिया देन वी विल बी डीलिंग दैट बट आई विल सजेस्ट लेट्स गो थ्रू वंस हेल्थ इंपैक्ट कोन जेमते कि हेडेक नोजिया इरिटेबिलिटी प्रीमेच्योर बर्थ हित है एनीमिया हित है हां आइटा पे अछि आइटा कहा जोगु हुए मर्क्यूरी पई हुए सर कैडमियम पे सर कैडमियम पई वेरी गुड ठीक अछि नेक्स्ट ब्रेन अफेक्ट मु ऑलरेडी कहितली ए सब होछि इंपैक्ट ऑफ योर हेवी मेटल्स नेक्स्ट असला पीएफएस कोन पर एंड polyfluoroalkali okay so polyfluoroalkali so it is polyfluoroalkali substance per and polyfluoroalkali substance it is called the pfas generally कौन हुए आपको हमें forever chemicals कोचो okay it has the partial or completely fluorinated कार्बन चेंज था माने फ्लोरिनेटेड कार्बन चेंज माने कार्बन सहित फ्लोरीन अटैच है कि सही तार केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं ओके ऑफ वेरिड लेंथ एंड ऑल यू शुड नॉट कंसर्न अबाउट दैट आपको फॉरएवर केमिकल्स कोंती एगुडा को ही हमें ताको कहूछु जो हमर स्टॉकहोल्म कन्वेंशन थिला ना दैट इज परमानेंट ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स दिस कम्स अंडर दैट स्टॉकहोल्म कन्वेंशन रा जो भी यू कैन से तो जो मेटल्स गुडा को हमें आइडेंटिफाई करथिलु इट इज वन ऑफ दैट मटेरियल्स ओके तो एगुडा को हमें सेति पे फॉरएवर केमिकल्स कहूछु कोठी यूज होची जनरली यू विल फाइंड दिस जो डेली यूसेज रे नॉन स्टिक कुकवेज रे जो वाटरप्रूफ रेन कोट वगैरह रहिला देन योर बायोसाइड्स ओके हाउसहोल्ड एजेंट्स सच एज क्लीनिंग एजेंट वगैरह जो माने फ्लोर क्लीनिंग वगैरह पे यूज करूछु देन यू कैन से स्टेन रेजिस्टेंट अपहोल्स्ट्री कार माने हमरो जो भी कुशन्स वगैरह रहिला
घरे जो हमें सोफा सेट यूज करछु सेठी भी यूज हुए फायर फाइटिंग फोम्स रे भी एटा यूज हुए एंड फूड पैकेजिंग ପାଇଁ यूज हुए दिस आर द यूज कॉमन यूज ऑफ द पीएफएएस ओके तो ये पीएफएएस को माने दैट यू शुड रिमेंबर कौन न्यूज रे थिला दैट इज नॉट दैट इंपोर्टेंट न्यू रिलीज पर्सन न्यू फाइंडिंग्स कौन कहूची रेन वाटर कंटेन सॉरी रेन वाटर अराउंड द वर्ल्ड इज कंटेनिंग कंटामिनेटेड बाय द पीएफएएस सेठी में एटा न्यूज रे थिला आउ किछि जेतु देखुचे अन्य किछि वाटर पॉल्यूटेंट्स भी जदि देखिबा गोटे होची एनपी okay so np is nonyl phenol so it is एटा कोन हमें यूज करछु it is a dispersant generally detergent रे यूज हुए तार आर भी नेगेटिव इंपैक्ट्स अछि ह्यूमन हेल्थ ऊपर एंडोक्राइन्स डिसरप्शंस करूची नेक्स्ट एंडोसल्फोन होची गोटे पेस्टिसाइड्स पेस्ट कंट्रोल ପାଇଁ यूज करा जाय ताको जो माने स्प्रेड करा हुए कॉटन कैश्यू फ्रूट ट्री पैडी ए सब क्रॉप रे एते डिटेल हम देखछनी बट एंडोसल्फोन विषय जानथिबे को सुप्रीम कोर्ट भी बैन करछि और स्टॉकहोल्म कन्वेंशन मध्ये बैन करछि दिस एंडोसल्फोन इज रिस्पांसिबल फॉर वन पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ कैटास्ट्रोफिक डाउनफॉल कैन यू टेल मी which was that species गोटे स्पीसीज ऑलमोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन you have an idea Vulture. yes Culture. that's a vulture okay very good that's a vulture ठीक अछि तो माने अपार्ट फ्रॉम एंडोसल्फोन ए बी सब कैन से केमिकल्स भी अछि वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरी केमिकल्स नेम ओके नेक्स्ट होची माइक्रोप्लास्टिक्स कावेरी बेसिन्स वगैरह देखिया को मिलुची जोडा कि हां डाइक्लोफिनाक भी अछि और एंडोसल्फोन बोथ डाइक्लोफिनाक तो इन जनरल डाइक्लोफिनाक को हमें ये यूज कर दोजन ना कोन तक कोजंती पेन किलर हिसाब रे हाँ sir, it was given to cattle. livestock yes so that's the main problem but see pesticides use also one of the major cause for the you can say endosulfone तो complete हमें ban कर दे endosulfone को sorry डाइक्लोफिनाक को नेक्स्ट माइक्रोप्लास्टिक रो कंटेंट माने जनरली कावेरी बेसिन रे बहुत अधिक देखिया को मिलछि माइक्रोप्लास्टिक हमें केते बडे कहबा इफ द यू कैन से दिस इट इज लेस देन 5 mm रो जति कम साइज रो यू कैन से पार्टिकल्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक इट इज कॉल्ड द माइक्रोप्लास्टिक दैट्स ऑल तो ए माइक्रोप्लास्टिक कोटे रहिला सो डाई टू हां ओके डाइक्लोफिनाक रो तार हां प्रीमेच्योर जो हैचिंग हे जाउतला नेक्स्ट इज द नानोप्लास्टिक के तोड़ कहबा तार डायमीटर खाली हमें तार साइज तक मन रखथिबा इट इज द स्मॉलर देन 1000 नैनोमीटर जति होची पार्टिकल साइज ऑफ द पॉलीथीन्स का जो भी प्लास्टिक्स द पार्टिकल्स ऑफ द प्लास्टिक इट इज कॉल्ड द नानोप्लास्टिक ओके आ एडी गोटे रहिला रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एटा गोटे टाइप रो डिवाइस ओके इट्स ए नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस डिवाइस जी कौन करे कि गोटे पर्टिकुलर सब्सटेंस माने पर्टिकुलर मैटर रो तार को टाइप रो केमिकल कंपोजिशंस अछि तांकर फेज कोन अछि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कोन अछि ता विषय इंफॉर्मेशन तमे जानि पर सो दैट वी कैन यूज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नेक्स्ट इज द अर्थ गंगा व्हाट इज अर्थ गंगा गोटे सिंपल टर्म खाली दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू रिमेंबर जदि आमे एबे पर्यंत कोन करथलु क्लीन गंगा मिशन नमामि गंगे एंड ऑल दोस मिशंस वी आर रिलीजिंग ओके एंड वी आर स्पेंडिंग crores of rupees but by see there is one more thing that is called जदि आपण जो ताको एग्जैक्टली कोन कोनती एनवायरमेंटल बिजनेस रो से आई टर्म एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस करिवा सहित ताको हमें गोटे इकोनॉमी मध्ये क्रिएट करि परिबा हाउ इज इट बिकॉज़ जेतो आमे कहूछु ग्रीन ब्रांडिंग कथा कोनोसी भी जिंस जेतोले आमे कहबा पॉलिथीन को बंद करदा तो पॉलिथीन बंद कले पॉलिथीन रो रिप्लेसमेंट गोटे जिंस दरकार सपोज वे पेपर रो तयारी हो किछि टाइप रो जिंस जो आज देखुछु छोटो छोटो बैग्स गुडा को मॉल्स वगैरह रे बिकुचंती 8 रुपीस 10 रुपीस 20 रुपीस सब रे तो 2000 मॉल तो बनउनी तापे तो गोटे थर्ड पार्टी बने कि ताकू दोउची तो व्हाट हैज डन बाय we are protecting our environment by reducing the use of your polythenes and along with that we are creating another economy itself okay so that was incorporate green economy okay thank you so that was incorporated in the earth ganga kon kochi creating the economic livelihood opportunity to sustain the activities
अंडर द नमामि गंगे रे जो भी हमें एबे पर्यंत एते एते टंका पुश करथलु तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू पुश those amount of those you can say amount of money entirely for another 15 years 20 years. So how the project is going to run? By making itself self sustainable. Okay, it can create what it aim kona, it will contribute around 3% of the GDP from the Ganga basin itself. Okay, out ta sito kona benefit more than 1000 crores for the next 5 years. So these are some kind of initiatives and you can say the roadmap and the blueprints that government has came up with. Jodi ei jinso implement haba to National Commission for the Clean Ganga taku implement karibo, then we'll see in detail. Earth Ganga kona, you should remember this, the economic avenues that we can harness from the Clean Ganga or the Namami Ganga program itself. So that is the Earth Ganga. Bharat Tap. What is Bharat Tap? So as our urban ministry रहिला, महुआ ministry कहूछु, Ministry of Housing and Urban Affairs, ये release करछि Bharat Tap. जब हम टैप खोलुछु ना मन इच्छा वाटर रिलीज बे. ओके, तो हम जेतले किछि वाटर यूज करू, ये हार्डली यूज you can say 20% of water or 80% of water waste है. To minimize the waste, तो आमे कोन करछु गोटे भारत टैप यूज करछु. से कोन करिवो, the aim is to provide low flow sanitary ware at scale. Okay, so the water जो flow होबो that will be restricted by this Bharat Tap. That's all. निर्मल जल प्रयास इस जिनस दरकार नहीं. स्वच्छ सुजल प्रदेश प्रथम स्टेट होची अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी. इट इज द फर्स्ट इंडिया's फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश. तीनटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट अंडर ताको मेजर करा होची. सी स्वच्छ सुजल होवा पे हेले तीनटा कंपोनेंट अछि. फर्स्ट जिनस कोन सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हिथिबा दरकार, जेंते में ड्रिंक फ्रॉम टैप को कहूछु, ओडीएफ थ्रू हिथिबो. बटन तापे थर्ड जिनस होची क्रॉस कटिंग ऑफ द इंटरवेंशंस लाइक द कन्वर्जेंस आईईसी ए सब जिनस हे पड़तो. कन्वर्जेंस आईईसी कोन बुझचंते? आईईसी गोटे टर्म को आपण यूज करि परिबे बहुत गुटे एसे राइटिंग वा अदर जिनस रे मध्ये. इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट सपोज एबे गोटे जिनस होला, इधर आपण ना माने गवर्नमेंट सब बेले केवल यू कैन से मॉनेटरी बेनिफिट रे बेनिफिशियरीज को डिस्ट्रीब्यूट करि परिबने. जेमते हमें कहले इनिशियल में एलईडी बल्ब्स यूज करथि, तो एलईडी बल्ब्स को गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट रे देला बिकॉज़ वी आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम द अब्रॉड कंट्री. कोन लाइफ लॉन्ग गवर्नमेंट कोन दे परियो कि आपण को? नो. देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर द आईईसी माने इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. लोकों को सेंसिटाइज करबा जो प्रोसेस कोछु दैट इटसेल्फ इट कॉल्ड द आईईसी इनिशिएटिव्स. ताको क्रॉस कटिंग और इंटरवेंशंस कोछु ताको माने यू कैन से कन्वर्जेंस डिफरेंट. सी स्वच्छ सुजल हवा पे हेले केवल गोटे ऑर्गेनाइजेशन केवल जल शक्ति काम करि परिबो नै. जल शक्ति से तो अदर मिनिस्ट्रीज रो मध्ये एवेन्यूज दे हैव टू मर्ज विथ. जेमति हमें अर्बन अफेयर्स कथा कहूछु, जल शक्ति कथा कहूछु, रूरल डेवलपमेंट रो भी पार्ट अछि, जेमति कि पंचायत राज वगैरह. तो बहुत गुडे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैज टू कम टुगेदर. दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस प्रोसेस. ओके, दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. ए जो प्रथमे हमर ओडीएफ थिला ना, ताको बर्तन हमें ओडीएफ प्लस कर देलु. ओडीएफ प्लस कोन केवल ओपन डेफिकेशन फ्री हेले हबनी, बर्तन ता से तो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पत्र कहूछु. ओडीएफ गोटे क्राइटेरिया. केवल ओडीएफ फ्री हेले हबनी, ओडीएफ प्लस कहूछु नुवा टर्मिनोलॉजी. इट इज कॉल्ड ओडीएफ विथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, जो माने म्युनिसिपैलिटी बर्तन घर सामने जो कचरा कलेक्ट करछि, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर ओडीएफ. Coming to the land degradation, so two things we have covered: air pollution, water pollution. Coming to the land degradation, you international conventions कौन अछि? United Nations Convention on Combat Desertification. जेमति UNFCCC थिला, like that UNFCCD अछि, तार भी हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी रे अछि. सेही रियो कन्वेंशंस रो बाहर के आसला, एंड इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट. ओके, से जो तीनटा एग्रीमेंट आसला से भितर दिस वन इज द लीगली बाइंडिंग. तो रिसेंट एटा काहे न्यूज अछि? रिसेंटली कॉप 25 माने 2050 सॉरी कॉप 15 हेतला. कोठी हेतला अबिडजान रे हेतला. कोटी डिआइवर रो कैपिटल अबिडजान. ताकर थीम कोन थिला? लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी. इट वाज द थीम ऑफ द UNCCD जो रिसेंट कन्वेंशन हेतला कॉप 15. ओके, कॉप 14 जो हेतला इंडिया होस्ट करथला. दैट इंडिया hosted it in the year 2019. तो आमे कोन करथले से कॉप रे व्हाट वाज द हाइलाइट? वी हैव restored around 26 million hectares of the degraded land to be by 2030. By 2030 India has kept a aim to restore 26 million hectares degraded land.
तो UNCCD रो किछि अदर इनिशिएटिव भी अछि एंड लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अगेन LDN फंड आउ लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम डिटेल्स नॉट इंपोर्टेंट इंडिया इज ए पार्टी टू UNCCD वी नो दिस COP15 रो आउटकम्स कोन नुआ कमिटमेंट्स आसिला जेमति कि रिस्टोरेशंस ऑफ 1 बिलियन हेक्टर 1 बिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड जेमति कि इंडिया प्रॉमिस करछि 26 मिलियन हेक्टर्स को रिस्टोर करियो बाय 2030 जेमति वर्ल्ड वाइड वी हैव केप्ट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ 1 बिलियन हेक्टर्स लैंड बाय 2030 ओके जेमति कि एड्रेस करिबा सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स बा अदर जो एस्केलेटिंग डिजास्टर माने जो गुडा को डिजास्टर रिस्क गुडा को रहला ताको हमें कम करिबा न्यू डिक्लेरेशंस हमें अबेडजान कॉल कहूछु वेयर the heads of the state and the government to boost the long term environmental sustainability Abidjan declarations on achieving the see Abidjan call is not that important Abidjan declarations is important it is related with the gender equality for sustainable land restoration ओके तो এই জিনিসটা কনফিউশন হেই পারে কোশ্চেন যদি আসে জেন্ডার ইকুয়ালিটি কোটে সেলা ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন সহিত বিকজ ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন কো যেতলে ডিল করছে এভরিवन हैज टू कंट्रीब्यूट इक्वल टाइप एंड एवरीवन शुड बी गिवन ए इक्वल अपॉर्चुनिटी सो दैट्स व्हाई लैंड डिग्रेडेशन हमें कहूछु जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल लैंड रिस्टोरेशन अदर इनिशिएटिव्स कोन रहिला साहिल सोर्सिंग चैलेंज साहिल सोर्सिंग कोन साहिल रीजन विषय जानथिबे समस्त जो अफ्रीका रे देखिबा इफ इट इज अफ्रीका ओके व्हाटएवर तो इट इज योर सहारा सब जो टॉप रे अछि तापरे ए पाखरे अछि दैट इज कॉल्ड सवाना ओके सवाना इज द ग्रासलैंड सॉरी सहारा इज द डेजर्ट ता भितरे ए गोटे इंटरमीडिएटरी गोटे एरिया रहिला दैट इज कॉल्ड द साहिल रीजन साहिल होची गोटे ट्रांजिशन बर्तन कोन होची ए जो डेजर्ट ता अछि सहारा डेजर्ट ए गोटा को धीरे धीरे आ तळु को बढ़ुची इट इज साउथवर्ड इंक्रीज माने एनक्रोचिंग धीरे धीरे बढ़ुची तळु को बिकॉज़ लैंड डिग्रेडेशंस फଳରେ तो व्हाट विल हैपन ए डे विल कम ए टोटल एरिया ता सहारा हि जीवो okay to prevent this African government and the African states achhanti jo mane specially going to hamper by this process they have come up with a program that is called the Great Green Wall African Great Green Wall re kon hobo they have planned 8000 kilometer belt of tree across the entire width of the Africa mane Africa ro if it is Africa ro west to east porjanto it is around 8000 kilometer etiki area re semane tree cover create karibe what will happen this tree will protect downward encroachment of your Sahara desert okay similar plan India ro bi achi India ro great green sorry not great green wall project achi India ro amar bi to India re gote desert achi what is that Sahara desert so ei jo Sahara desert re जो पोर्शन रहिला ए सहारा डेजर्ट ता बर्तन अरावली रो इपोर्ट साइड न आसु तो सेति पे हमें एटी प्लांटेशंस करिबा okay starting from Gujarat till your not Sahara third हाँ तो starting from your Gujarat till your Delhi we are planning for this one tree plantation drive that is called the Great Wall Plan of India sorry Great Wall नहीं Green Wall Plan बुझी पारले समझते ठीक है भूल भाल मु कहि देली but end of the day I have rectified doubt clear इन तो कहारो okay नेक्स्ट वन मोर इज पुनीत सागर अभियान एटा पढ़ेले ना ठीक से माने भूल हबनी बट मते टाइम न था पढ़िया भाई पुनीत सागर अभियान कोन UNEP गोटे साइन करछि MOU विथ द NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स सहित कोन करिवे से माने फॉर द टैकलिंग ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन तो पुनीत सागर इज रिलेटेड विथ द प्लास्टिक पोल्यूशन UNEP विथ NCC ओके सेंसिटाइजेशंस करिवे दैट्स ऑल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 see waste management rule 2022 गोटे अम्ब्रेला इनिशिएटिव व्हाट इज द अम्ब्रेला इनिशिएटिव ता भितरे बहुत गुडे अन्य रूल्स अछि ओके अन्य रूल्स गुडा को गोटे एमलगमेशन हमें कर देलु एटा अपन मन रखिबे को एंटिटीज को रूल रे कवर होचन जेमति कि वेस्ट बैटरीज रहिला बैटरीज कहा दर कवर हबो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल अछि इजी टू रिमेंबर 2022 रो देन होची पैकेजिंग प्लास्टिक ओके जेमति बोटल्स हो बा अदर जो भी हमें हाउस होल्ड माने प्लास्टिक्स को बाहर करूछु सो दैट इज managed by the plastic management rule 2016 then होची माइक्रो एंटरप्राइज जो मान रहिले जो माने कोन सी टाइप रो जति पोल्यूशंस करूचंती ई वेस्ट जति जनरेट करूचंती दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट इट इज गवर्न्ड बाय द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 दैट यू शुड रिमेंबर ओके को टाइप रो एंटिटी
को एक्ट अंडर रे कवर होचंती। Next is the compulsory registration. What is the compulsory registration? Compulsory registration of the manufacturer, producer, refurbisher or recycler. से माने कहा अंडर रजिस्टर करिवे निजको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर रे रजिस्टर करिवे माने जे मैन्युफैक्चर करछि जे प्रोड्यूस करछि जे रिसाइकल करछि समस्त को माने रजिस्ट्रेशन हबा दरकार। ओके आ गोटे एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स जो प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी आमे कहूछु माने प्रोड्यूसर आगु कोन होतला ईपीआर कथा जो सपोज गोटे प्रोड्यूसर अछि गोटे सैमसंग कंपनी अछि जे गोटे मोबाइल तयारी कर देला बिकी देला ता काम छिड़ी गेला वर्तमान नाही से पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो लाइफ टाइम सरी जाउछि सपोज जने आपन को मोबाइल खराब हो गेल नाउ यू आर गोइंग टू थ्रो इट अप so it is the responsibility of the company they should reprocess it okay so that say e-waste को केमति minimize करा जाय परिबा that is also responsibility falls under the head of the manufacturer it is called the extended producer responsibility okay details तो अच्छी बहुत but this much understanding you should have at least responsibility कौन producer रो responsibility कौन so 60% sorry 60% of the year 20 हाँ केते responsibility जाय छी जदि 2022 24 सुधा 60% responsibility and माने 24 25 रे 70% then next year माने धीरे धीरे हमें graded अनुसार ताको पढी छु ओके माने 80% responsibility आसीबो by 27 and 28 okay so like that माने केते परसेंट प्रोडक्ट रो you can say reuse बा तारो end use को ensure करिवा is the responsibility of the producer status of e-waste e-waste which is third largest producer of electronic waste which is India after China and US only 1.5% of electronic waste जो माने बाहरुची that is recycled through the institutional process आउ रिमेनिंग कोन होची नॉन इंस्टीट्यूशनल जो रैक पिकर्स गुडा को उठौचंती ताको कोन यूज करा होची केमती यूज करा होची कैन माने बहुत ही क्रूड वे रे ताको यूज करा होय बहुत टाइम बैटरी वगैरह रा प्रोसेस सेमती करा होय आ तापले बहुत हैजार्ड्स मते होची बिकॉज़ सी नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस रे कोन होय से माने जान नथंती सेफ हैंडलिंग ऑफ द बैटरीज बैटरी रे लिथियम अछि ओके सो लिथियम इज ए एक्सप्लोसिव मटेरियल जते ताको हमें बिकॉज़ इट हैज टू बी स्टोर्ड इनसाइड यू कैन से स्टील कंटेनर्स ए सब रे ताको स्टोर करिया को पड़े लिक्विड नाइट्रोजन ट्रे इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज कोन अछि जेंति कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑलरेडी स्टॉकहोम कन्वेंशंस हम डिटेल देखि सरचे ए डिक्लेरेशंस कोन करूची जेंति कि सी द कमिटी कंक्लूडेड बट रिसेंटली कमिटी हितला से कमिटी कोन करला 4 ऑफ द 5 केमिकल्स अंडर द कंसीडरेशंस माने कंसीडरेशन सब्सटेंस जेंति ए सब केमिकल्स अछि बट इट्स नॉट यूज्ड माने फॉर योर प्रीलिम और द मेंस बिकॉज़ एते डिटेल्स से माने पचरिबे नाही आमे जानिछा दरकार जे स्टॉकहोम कन्वेंशंस कहा से रिलेटेड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेवेंट ओके जेमती गोटे पीओपी हम ऑलरेडी देखिले रिसेंटली तो स्टॉकहोम कन्वेंशन कोन इट्स ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी केबे आस्तिला 2001 रे आस्तिला इंडिया इज ए पार्टी टू दिस इंडिया रेटिफाई करछि 2006 रे आउ देखि किछि इंपोर्टेंट पार्टी जो माने को रेटिफाई करि नाहंती दैट इज लाइक यूएस इजराइल मलेशिया ए कंट्रीज पुडा रेटिफाई करि नाहंती स्टॉकहोम कन्वेंशन अंडर रे केमिकल्स को डिफरेंट एनेक्स रे डिवाइड कराइ जेमती एनेक्स ए अंडर जो केमिकल्स अछि ताको एलिमिनेट करिबा बिल्कुल खत्म करियो ताको बिल्कुल यूज करनी वाली नेक्स्ट एनेक्स बी अंडर जो गुडा को अछि ताको हमें रेस्ट्रिक्शंस यूज करिया और एनेक्स सी रे जो मान दोछन ताको अनकंडीशनल प्रोडक्शन ता ऊपर कोन से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लाइक दैट कोको मेटल्स फॉल करचंती एते डिटेल दरकार नै हमको कमिंग टू रोटेडम कन्वेंशन रोटेडम कन्वेंशंस कोन see one thing you should remember prior informed consent pesticides on Sir, okay it is rotate Rotterdam is a hazardous pesticide बनाओ ପାଇଁ कराइछ yes prior informed consent रो अर्थ कोन it is a mechanism under the Rotterdam conventions for formally obtaining and disseminating the decision of the importing parties on their willingness to receive the future shipments of the hazardous chemical suppose gote country achi a he is sending one shipment to b that contains hazardous pesticides like that as you said तो ए केस रे ए कंट्री को जे शिपिंग करूची ताकू ता पे जरूरी होची ए बी टू कंसेंट ऑब्टेन करियो प्रथमे ओके आई एम शिपिंग दिस you give your consent like that so it is called the PIC that is called the prior informed consent okay आउ ए ताकू पूरा डिस्क्लोज करिवो हमो जो शिपमेंट जाउची माने XYZ कंटेंट्स अछि सेही भितरे whether you are willing to you are ready to import this or not okay so like that
हाँ ए भितरे कोन करूची जेमति कि किछि कमिटी किछि पर्टिकुलर जिंसो को रिव्यू करथिला जेमति कि इप्रोडाइन तो एटा कोन इट्स ए कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक रिप्रोडक्शन से यूज हुए देन होची टर्ब्यूफॉन्स इट्स ए सॉइल इंसेक्टिसाइड ये सब जिंसो को अगेन इट्स दीस आर द कैटेगरी ऑफ द पेस्टिसाइड्स दैट वाज बैंड दीस आर 15 रे हां अनुपमा वर्मा कमिटी गोटे रिपोर्ट देथिला इंडिया को तो इंडिया इज यूजिंग द केमिकल वाज परमिटेड बाय इंडिया को केमिकल्स को यूज करछ जोटा अनुपम वर्मा कमिटी रिकमेंडेशन था ऑन दैट इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टर्ब्यूफॉन्स रोटेडम ऊपर देखिबा इट इज अनदर लीगली बाइंडिंग ट्रीटी रोटेडम कन्वेंशन असला इन द ईयर 1998 रे इंडिया इज ए पार्टी टू दिस कवर करछि कोन पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स अदर रिपोर्ट्स देखिबा जदि जो गुडा को इंपोर्टेंट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जोटा कि स्टेट ऑफ मु कहितली जनरली आसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट आछि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 this is by the UNESCO and finally world land outlook it is released by the जो हमर UNCCD पढिले that is released by the UNCCD okay outlook report that's all the next as biodiversity will be covering tomorrow ठीक अछि तो जीके पढिसंती समस्ते सर till this point हाँ Carenia brevis which caused the red tides এটা কোন it's a algae Carenia algae brevis. sir. Algae. It's a algae that is responsible for the creation of it's a red tides okay so generally it is occurred in the coast of Florida रे देखा हैतला okay तो से किछि जिंस प्रोड्यूस करछि that is called the brevitoxin it's fatal for the aquatic life Odin is the god of माने poetry wisdom magic ए सब जति आपण एवेंजर वगैरह हां so it's a Norse mythology answer so he is one of the king of your Asgard जो माने एवेंजर्स देखियो easy for them to understand इंडिया लॉन्च करथला एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मेकानिज्म को कंट्री से तो ऑस्ट्रेलिया विथ ऑस्ट्रेलिया माने जणे और जण को डिग्री को म्यूचुअली एक्सेप्ट करिवे दैट्स ऑन दैट नेक्स्ट इज द टोरिनो स्केल कौन इट्स यूज्ड टू मेजर व्हाट it's related to space science safe harbor principle एटा को एक्ट अंडर अछि IT it's IT Act okay it's very important what a terminology you should remember this generally कौन हुए कि IT Act 2000 अनुसार हमें सेफ हार्बर प्रिंसिपल गोटे टर्म रखिछु ता अंडर रे सपोज फेसबुक अछि तो फेसबुक रे सपोज यू आर माने आपण फेसबुक रो गोटे अकाउंट अछि आपण किछि भी गोटे सीडीसीएस कमेंट्स वगैरह रखले बा किछि भी गोटे माल यूसेज करले फेसबुक को तो ता फल रे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेसबुक को ब्लेम करिबोनी बिकॉज़ इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी ओके तो रिसेंटली जो माने हमें डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 ने के आछू तो सेडी चांसेस अछि जे ए पर्टिकुलर जो क्लॉज को किछि हमें अमेंड करि पारू आईबीएसएफ रो फोरम कोन आईबीएसए जानथिबे इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका नेक्स्ट दिस वन एम्स एंड पॉलिसी 2023 कहार राजस्थान तमिलनाडु which institute recently released a report that is improving economic viability of the gausalas नीति आयोग ठीक अछि तो गौशाला रो कोन माने आम पाखरे माने जदी एडा कोन होछि प्रोडक्शंस एंड प्रमोशंस ऑफ द ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विद द स्पेशल फोकस ऑन इंप्रूविंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द गौशाला बिकॉज़ जो काउ डंग वगैरह फर्टिलाइजर्स कर परिबा इको फर्टिलाइजर्स हम कहउछु ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स
based on that. MIDH scheme, এটা কাহার? It's related to which? Horticulture. The mission for the integrated development of horticulture. Next is Madhav National Park. Who state? Madhya Pradesh ra. Madhya Pradesh. Very important. Okay. It provides a connection between the dita tiger reserves visare, ଯେମିତି କି Panna tiger reserve और Ranthambore tiger reserve ଭିତରେ connectivity provide କରୁଛି. Which is the first Indian documentary to win the Oscar? Elephant whistle. Elephant Whispers. With the first woman in India to receive the International Union of Jyotirmay Applied Chemistry. Jyotirmay Jyotirmay Mohanty. See, कोउटर scientist जने Bark ra. Park. Sir. One second. Tyler Nicer. कौन है? Spider. It is Spider. Bhubaneswar କରିଛି Nicer. Okay. The pilot trial of the MD-15 bus and the prototypes. M100 ଜଣ କହୁଛୁ. କୋଉଠି? Bangalore. Next. Which one is? India signed a loan agreement with which institution for construction of the Green National Highway Corridor project? World Bank. World Bank से. चारटा स्टेट रे से ग्रीन हाईवे करिवो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश रे. Okay. So Al Mohud Al Hind 23. So it's an exercise between India and Saudi Arabia. Okay. Saudi Arabia hitler recently. Saudi Iran detent. It's a peace deal between peace deal between Saudi and Iran. Ki broke China. Just broke by China. China. Middle में China काम करथिला. Next is the Barda Wildlife Sanctuary. कोठी अछि? Gujarat. Very good. Gujarat. Okay. तो माने प्लान करछन किछि एस्थेटिक लायंस को शिफ्ट करिवे सेठी की गिर रू. Recently, research predicted that the new ocean could be created as which region splits into the two separate parts. Africa. Africa रे जो East African Eastern rift. हाँ. Eastern Africa रे गोटे rift valley अछि. सेटा कोन ना expand करूछि. ताको भितर जो water bodies गुडा अछि सेगुडा बढ़ी जिबे. Okay. आउ सेटा धीरे धीरे गोटे ocean रे create हिजो. INS द्रोणाचार्य कोठी अछि? It's in Kerala. ठीक अछि. ताको Brazilian scholars मिलछि. Okay. Which recently discovered species have named जो में KN Ganeshian. Gecko, sir. It's a gecko. Okay. Then Hochi Mustatils are the stone structures that have been recorded in which country? Saudi Arabia. It's a Saudi Arabia. Okay. Structures made up of the sandstone walls. Which ministry implements the PM Ministry of Textile. Okay, PM Ministry of Textile. And it's a mega integrated textile resin and apparel parks. The CES stat. It's an appellate tribunal. It's under the 1862. 1862. Very good. Next, who are the beneficiaries of the Sagar Parikrama program? Fishermen. So it are interactions. It's to facilitate the interactions between the fishermen's, coastal communities, and the stakeholders when schemes or programs को ସେମାନେ benefit ही करिवे. Audit online को ministry रो. Ministry of Panchayat Raj. Okay. Confusion create करियो exam रे आसे तो rural development दे दो. Okay. Heal in India. कौन है? वो ministry. Family welfare. Ministry of Tourism. Health tourism. हाँ नहीं ठीक है. What is this? Which block recently announced that the Net Zero Industry Act how it is critical raw material? EU, sir. It is net zero लगना वाला EU ही रोई. ये तो लगी.
Which city hosts the Civil 20 India 2026 Inception Conference? नागपुर नागपुर। सर वॉइस सुना जाओ हाँ हाँ स्लो आवाज ठीक है। यूवी का सर इसरो इसरो यंग माने पिलांको पाखरे स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करिया। तो कितने नंबर क्वेश्चन थिला? हाँ दिस इज डन। तापर होची को-पायलट इज ए एआई powered digital assistant developed by Microsoft. International Day for the Elimination of the Racial Discrimination 21 March 21. As per the report released by the Standing Committee on the Water Resource, over exploitations of groundwater जो हमें पढ़ी थी आज जी अभी को स्टेट पंजाब में हरियाणा। पंजाब हरियाणा। Which country has unveiled plan for the free and the open Indo-Pacific? जापान By Japan. India adopted the विराटनगर Brent-Nagar Declaration. विराटनगर Viratnagar. नेपाल से It's with the Nepal. Next is India signed a MOU. Which global institutions for the Global Millet Conference? WFO. Sorry, World फूड प्रोग्राम Food Program. WFO. WFP. Accelerating the change to solve the water and the sanitation crisis. वाटर डे March by Water Day to celebrate. Next is the World Happiness Day 2023. Theme कौन था? फूल माइंडफुल और फूल Big break. Rank of India World Happiness Index में 1 to 6 Next is the this one. Gorsam Kora Festival. Sahara. भूटान India with the Bhutan. Next is Abel Prize related to मैथमेटिक्स mathematics. Okay. So this is all. बाकी आगू का मैं कंटिन्यू करिया। ठीक है जी। We'll be meeting tomorrow then. Thank you.